what we are going to do today, we will cover all the situation where we are supposed to use ing. Because in current situation, if I'm talking to you, I'm learning, I'm teaching, you are learning, so that is okay. We know, we are where we use ing form for the continuous tense, means current moment. But there are lots of situation where we are supposed to add ing form, but we are not aware, which we will cover today. Okay, to add ing form, this is the second condition कि ऐसा करके मैंने ऐसा किया. फॉर एग्जाम्पल कि मैंने की अपने पर्स से निकाल के लॉक खोला, या पॉकेट से अपनी की निकाल के मैंने लॉक खोला. तो इस तरीके से जब हम ऐसा करके ऐसा किया बोलते हैं ना, वहाँ भी ing लगता है, ऐसा करके. सो टेकिंग आउट मीन्स, टेकिंग आउट मतलब टेक आउट मतलब बाहर निकालना. कोई भी चीज़ अंदर चली गई, आप कह रहे हो सो टेक इट आउट मतलब उसको बाहर निकालो. सो टेकिंग आउट द की फ्रॉम माई पॉकेट, आउट ऑफ माई पॉकेट ज़्यादा बेटर जाता है, आउट के बाद ऑफ ही आता है. टेकिंग आउट द की ऑफ माई पॉकेट, आई ओपन द डोर, मैंने डोर ओपन किया. टेकिंग आउट द की, आई ओपन द डोर, ये भी कह सकते हैं. Taking out the money from my pocket, I gave to someone. Okay, taking out money from my pocket. ऐसा करके मैंने ऐसा किया. Getting permission from you, I informed others. मैंने ना आपसे परमिशन लेके सबको इन्फॉर्म किया है, ठीक है, किया था. I informed others. Okay, like taking your permissions, I informed others. Yes. Okay, informing you, I purchased something. मैंने आपको इन्फॉर्म करके ये खरीदा था. So informing you, I purchased this thing. And taking your number from my brother, I called you. अपने भाई से आपका नंबर लेके मैंने आपको कॉल किया. तो अक्सर हम ये सब बोलते हैं ना. So I took your number from my brother, then I called you. हाँ, हम ऐसा भी बोलते हैं कि मैंने आपका नंबर अपने ब्रदर से लिया था. और ये भी बोलते हैं कि अपने भाई से नंबर ले करके मैंने आपको कॉल किया. तो दोनों सिचुएशन हम हिंदी में अलग अलग बोलते हैं ना, सेम मीनिंग के साथ. बिल्कुल ऐसे ही हम ये भी बोलते हैं. Still you are getting that same kind of noise? Yeah, it is better than before. Quite better. Okay, nice. Okay, so taking your number from your brother, I called you. Next one, buying milk from the shop, I made tea. Borrowed her dress, I went to the party. Dad, I went to my friend's house. मैं अपने फादर को इन्फॉर्म करके अपने फ्रेंड के हाउस गई थी. अपनी कार पार्क करके मैं मॉल में एंटर की. कैसे बोलेंगे इसको? Right. Okay, so please speak one sentence. Informing you, I have missed your class. Okay, अच्छा, अगर हाँ, वेरी गुड. अगर हम बोलना चाहें कि अपने बॉस से बात करके मैंने वो मीटिंग कैंसिल की, कैसे बोलेंगे? Informing my boss, I have cancelled that meeting. बात करने को हम बोलते हैं have a word with someone. I think you know already, right? Yeah, have a word with someone. Okay, so having a word with my boss, I cancelled the meeting. Having a word with my boss, yes. I cancelled the meeting, and also we can say ना informing my boss, I have cancelled. ये बोल सकते हैं, यही एडवांस इंग्लिश होती है. और इसको ही हम बस और कुछ नहीं, बिजनेस लैंग्वेज कहते हैं. बिजनेस लैंग्वेज यही होती है. बिजनेस इंग्लिश क्या होती है? यही होती है. कॉर्पोरेट लैंग्वेज क्या होती है? बहुत ही पोलाइट और थोड़ी सी इंटेंस. जाके आप देखोगे तो बहुत सोफिस्टिकेटेड साउंड करती है. इफ यू आर इंटरेस्टेड, सो आई विल टीच यू बिजनेस इंग्लिश. आई लव स्पीकिंग बिजनेस इंग्लिश, एंड दैट इज मोर फॉर्मल एंड सो पोलाइट. ओके, जैसे कि right. And what I want to learn. Okay, because if I'm into professional world, then I have to speak business English. Yes, I have a particular session for business English, and I love learning and teaching as well. कि बहुत soft and polite sound करती है. Okay. Right. Having word with my parents, having word with my boss, हम इस तरह से बोल सकते हैं. अच्छा, अभी तक हमने 2 सिचुएशन कवर किए हैं. So उसकी ऐसा करना करके, दूसरा क्या है, ऐसा करके मैंने ऐसा किया. एक चीज़ निकाल करके मैंने उसको खोला, उससे बात करके मैंने ऐसा किया. करके और करना, 2 चीज़ें मैंने कवर कराई अभी तक. ठीक है, अब हम थर्ड कवर कर रहे हैं. थर्ड हमारी कंडीशन है विदाउट. विदाउट के साथ हमेशा ing फॉर्म आता है. विदाउट, जैसे कि मुझसे बिना शेयर करे आप कुछ नहीं खा सकते. यू कांट ईट एनीथिंग विदाउट शेयरिंग विद मी. विदाउट शेयर नहीं यूज़ करेंगे, विदाउट शेयरिंग आएगा. Without sharing, without informing. Yes, okay. Like you can also say ना, without informing you can't miss my class. Yes, without informing. तो विदाउट के साथ हमेशा ing ही आता है. Okay. Without lying, can you prove yourself? Without offering me, how could you eat? So without के साथ हम ing ऐड करते हैं. Can you speak one sentence relate this situation? Without taking me, how could you go to like any trips or destinations? Yes, right, perfect. Okay, without having your practice. अच्छा, without practicing भी कह सकते हैं. Without practicing, how can you be fluent?
Yeah, without practicing how to be with fluent. Yes, okay. नेक्स्ट वन, अब हमारी ये कंडीशन 4 है, स्टॉप के साथ में आईएनजी यूज़ करते हैं. ही स्टॉप्ड टॉकिंग टू मी एवर सिंस आई स्कोल्डेड हिम. यहाँ पर हम दो चीज़ें लर्न करेंगे. हियर वी आर गोइंग टू फोकस ऑन टू थिंग्स टुगेदर, स्टॉप टॉकिंग एंड एवर सिंस. मतलब जिस टाइम से मैंने उसे ऐसा कहा, सो एवर सिंस आई स्कोल्डेड हिम. So he stopped talking to me ever since I scolded him. He stopped heckling me during phone calls ever since I slapped him. Okay. He stopped chasing me ever since I complained against him. So he stopped doing something. We are talking about past here. He stopped doing something. And I stopped watching horror movies ever since I watched that horror scene. My son stopped playing games on mobile ever since I scolded him. My son stopped playing on, actually here it is present, my cleverness. I will stop talking, so stop talking with my friends if once I detect भी कह सकते हैं. अगर एक बार ना मुझे उनको पता चल गया कि they are playing game with me, they are playing trick on me, so I will stop talking to them. And if once I detect his cleverness or craftiness, okay, he will stop following you if you keep interrupting him all the time. मतलब वो बात मानना बंद कर देगा अगर बात बात पे उसे इंटरप्ट करोगे तो. My brother stops helping me if I scold him. Unless I help him. जब तक मैं उसकी हेल्प नहीं करती हूँ वो मेरी हेल्प नहीं करता. तो unless बहुत अच्छा है. When I was learning I found really it is difficult, but now I speak it very fluently and I know the meaning. Like unless I help him, he stops following me, he stops helping me. We can speak like this. This is more advanced. Okay. So I hope it is clear. Please add one sentence. Stop plus ing. Stop plus ing. But ever since is there na only. अच्छा, एवर सिंस का मतलब है जब से, मतलब जिस समय से. ओके. एवर सिंस, जब से मैंने वो मूवी देखी है ना, मैं उसका फैन हो गया हूँ. तो हम लोग ऐसा बोलते हैं, एवर सिंस आई वॉच दैट मूवी आई हैव बिकम अ ग्रेट फैन ऑफ हिम. आई हैव बिकम द डाई हार्ड फैन ऑफ हिम, फैन ऑफ हर. सो हम इस तरह से बोल सकते हैं. ओके. I can say now also I stopped rush driving ever since I met an accident. I met with an accident. अगर आप meet के साथ with लगा रहे हो, it means you are talking about accident. But if you are using meet separately, means without any preposition, it means आप meet की बात कर रहे हो. I wanna meet you. I wanna meet with you अगर मैं ऐड करती हूँ तो meet और with साथ में आने का मतलब accident होना होता है. Okay. Okay, met with an accident. Yes. So ever since I met with an accident, I stopped. What? Rush driving. Okay. I stopped rush driving. Okay, I stopped driving fast. I stopped driving fast ever since I met an accident. Met with an accident. Met with an. Yes. जब से मैं न्यू सिटी में शिफ्ट हुआ हूँ, उसने मेरे घर आना ही बंद कर दिया है. He stopped coming to my home ever since I shifted to new city. Yes. Good. ओके. अच्छा, नेक्स्ट कंडीशन, बिफोर के साथ आईएनजी आता है हमेशा हमेशा. बिफोर गोइंग एनीवेयर प्लीज़ इन्फॉर्म मी. अच्छा, इसमें दो कंडीशन है कि आप ऐसा भी बोल सकते हो कि बिफोर गोइंग एनीवेयर, इससे पहले कि आप कहीं और जाओ मुझे इन्फॉर्म कर देना. बिफोर गोइंग एनीवेयर प्लीज़ इन्फॉर्म मी. या बिफोर यू गो, बिफोर यू लीव. अगर हम बिफोर के बाद में यू और किसी सब्जेक्ट ही शी को हम इन्वॉल्व कर लेते हैं, इफ़ वी इन्वॉल्व एनी अदर सब्जेक्ट आफ्टर बिफोर, देन वी कैन अवॉइड यूजिंग आईएनजी विद वर्ब. So before you go anywhere, before you order online, please let me tell you, I have already prepared the meal. You no need to order it online. Okay. Okay. So before you leave, before you order, before you go, before you this. Okay. Before dying. Okay, this is our next sentence. Before dying, he wrote a letter. Before he died, he wrote a letter. Here we are talking about past time कि मतलब मरने से पहले उसने एक लेटर लिखा था. He wrote a letter before dying. अच्छा, ये भी तो कह सकता हूँ मरने, लाइक इसमें मैं ये भी ऐड कर सकता हूँ, मरने से पहले मैं ये करना चाहता हूँ. Before dying, I want to do this. Before I die हम बोलेंगे. Before I die. Okay, before I die. Okay, before I die. तो हम I को इन्वॉल्व कर रहे हैं ना, तो इसके लिए हम इसको die को सिंगल यूज़ कर सकते हैं. Without ing we are free to use. But before dying I want to do this thing. मरने से पहले. So before dying I want to do this thing, or before I die. But normally what happens in this situation, especially sometimes it is grammatically correct, but while speaking we feel it is not sound good. It's not sound good. So what we have to do, we have to use the second way of using it. Before I die. Before dying. Okay. अब मैं कह रही हूँ, इससे पहले कि आप कुछ ऑर्डर करो मुझसे पूछ लेना. प्लीज आस्क मी बिफोर ऑर्डरिंग समथिंग ऑनलाइन. ऑर्डरिंग अच्छा नहीं साउंड कर रहा है, तो बिफोर यू ऑर्डर ऑनलाइन प्लीज लेट मी नो. प्लीज कन्फर्म इट फ्रॉम मी. सो इस जगह हम ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन बोलते हुए हमें सेंटेंस की ब्यूटी का भी ध्यान रखना है. ओके. ज़्यादातर ये कंडीशन बिफोर के साथ आती है. बिफोर यू गो. आफ्टर के साथ भी आता है. आफ्टर यू गो. अच्छा, आफ्टर के साथ में भी हमें आईएनजी यूज़ करना है.
सो बिफोर डाइंग, ओके। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, जैसे हम आईएनजी यूज करते हैं ना, सो वेदर इट इज प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, वी आर फ्री टू यूज आईएनजी फॉर्म विद मींस ऑल फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट एंड इट विल गेट द सेंस, इट विल क्लियर द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। Like I can say, I'll eat my meal after you go. यस, आफ्टर गोइंग है ना, आफ्टर यू गो, ये ज़्यादा अच्छा साउंड कर रहा है। ओके, Yeah, after you go is अच्छा, मैं पूछ रही हूँ कि अच्छा, यहाँ से लीव करने के बाद क्या आप मुझे मिस करोगे? सो विल यू मिस मी आफ्टर यू लीव? आफ्टर लीविंग फ्रॉम हियर, ये भी सही है। आफ्टर लीविंग दिस क्लास, आफ्टर लीविंग दिस जॉब, आई विल मिस यू। सो आफ्टर लीविंग दिस क्लास, आवर आफ्टर लीविंग दिस फील्ड, आवर आफ्टर लीविंग दिस जॉब, हम ये भी सही बोल रहे हैं, बट आफ्टर आई लीव दिस, ये भी सही है। okay. ओके, That's good. क्योंकि आफ्टर So have you ever लीविंग अच्छा साउंड कर रहा है, ठीक है, आफ्टर लीविंग अच्छा साउंड कर रहा है, और आफ्टर आई लीव भी अच्छा साउंड कर रहा है, लेकिन कई बार जैसे हमने ऑर्डरिंग को भी पकड़ा, ऑर्डरिंग हम बोल सकते हैं, लेकिन बोलने में बिल्कुल अच्छा साउंड नहीं कर रहा है, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन उस टाइम के लिए है। So I'm asking one question to you. Like, is it correct? You can like just say, like, have you ever missed any student after your class? आई मिस ऑलमोस्ट माई एवरी स्टूडेंट, मैंने अपना काम खत्म कर लिया था, आई हैड कम्प्लीटेड माई वर्क बिफोर ही लेफ्ट, बिफोर ही लेफ्ट बोला मैंने, बिफोर लिविंग कह सकते हैं यहाँ पर, अगर हम आईएनजी लगाएंगे ना तो आईएनजी से चल जाएगा, वो तीनों चीज़ों को कवर कर लेता है, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, बट स्पेसिफिक होने से क्या होता है कि आपको सेकेंड फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा पास्ट के लिए, प्रेजेंट और सिचुएशन विल के साथ आपको फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा। ओके, सो बिफोर कॉलिंग विल यू आस्क मी, मुझसे पूछोगे ना कॉल करने से पहले, बिफोर यू कॉल विल यू आस्क मी, इस तरीके से हम बोल सकते हैं बिफोर यू कॉल। दूसरा तरीका क्या है, बिफोर यू कॉल, इससे पहले कि आप कॉल करो, कॉल करने से पहले या इससे पहले कि आप कॉल करो, दो तरीके हैं।